So students, let's discuss about endometriosis. So first, you should know what is endometriosis. Endometriosis क्या होती है? Basically, see, this is our uterus. Okay, this is the fallopian tube. Here, this is what? Fimbriae. And here, these are the ovaries. This is what? This is ovary, fallopian tube, and this is the uterus. Now normally you know our uterus is lined by endometrium. So here in red color, this is what? This is the endometrium. This is endometrium. You know our uterus has 3 layers: myometrium, endometrium and perimetrium. Okay, so this is what? रेड कलर में ये है एंडोमेट्रियम. तो बेसिकली क्या होता है कि जो एंडोमेट्रियम है वो सिर्फ यूट्रस में प्रेजेंट होगी, बट इन केस ऑफ एंडोमेट्रियोसिस क्या होगा, ये एंडोमेट्रियम कहीं और जाके इम्प्लांट कर जाएगी. दैट लोकेशन कैन बी fallopian tube, that location can be ovaries, that location can be pelvic peritoneum. So right here, what is endometriosis? What is the definition? So what is definition? It is the presence of active endometrial tissue outside the uterus. Outside the uterus. Okay. अभी ये जो एंडोमेट्रियल टिश्यू है इसमें क्या क्या चीजें होती हैं? एंडोमेट्रियल टिश्यू इंक्लूड्स द स्ट्रोमा प्लस glands. Stroma and glands. Okay. So this is the definition of the endometriosis. Now let's discuss what are the location where endometrium can implant. So locations क्या क्या हो सकती हैं? Endometrium goes to fallopian tube. Can go and implants in the ovary. It can go to where? Pelvic peritoneum. It can also go to retrovaginal septum. Even it can go and implant on the uterosacral ligament. जब एंडोमेट्रियम जाके यूट्रोसैक्रल लिगामेंट पे इम्प्लांट कर जाएगी ना, तो उस सिंड्रोम, हम उसको एक पर्टिकुलर नाम बोलते हैं, उसको हम एलन मैस्टर सिंड्रोम, ठीक है, बिकॉज इट वाज डिस्कवर्ड बाय एलन एंड मैस्टर. ओके, सो दीज आर द लोकेशन वेयर endometrium can go and implant. Now what are the risk factors? What are the risk factors for endometriosis? The first risk factor here is the genetic mutation. क्या होता है? Genetic mutation. कौन से जीन की जेनेटिक म्यूटेशन होगी? यहाँ पे एक जीन होता है, that is CRAS gene. There will be CRAS gene mutation. Second risk factor here is what? Second is increased level of estrogen. अगर estrogen ज़्यादा है तो there will be more chances of endometriosis. Third risk factor is what? That is early menarche.
or you can say late menopause. Early menarche and late menopause are the risk factor for endometriosis. Why? Because अगर menarche जल्दी शुरू हो जाए तो ऑब्वियसली एंडोमेट्रियम को एक्सपोजर भी जल्दी होगा ईस्ट्रोजन का, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, एंडोमेट्रियोसिस. और लेट मीनोपॉज के केस में भी सेम मैकेनिज्म है, लेट रहेगा तो ज़्यादा टाइम तक एक्सपोजर रहेगा एंडोमेट्रियम को हार्मोन का, तो इट विल लीड्स टू एंडोमेट्रियोसिस. नाउ अदर रिस्क फैक्टर इज द ओबेसिटी. आपको पता है जो ओबीस फीमेल्स होती हैं उनमें ईस्ट्रोजन ज़्यादा होता है. क्यों? बिकॉज एंड्रोजन ज़्यादा होंगे. और जो एडिपोज टिश्यू होता है ना वो क्या करेगा, उसके पास एक एंजाइम होता है एरोमेटेज. वो एरोमेटेज क्या करेगा, एंड्रोजन्स को कन्वर्ट करता जाएगा किसमें, ईस्ट्रोजन. जस्ट रिमेंबर ओबेसिटी में क्या होगा, ईस्ट्रोजन ज़्यादा है क्योंकि एडिपोसाइट के पास क्या है, एरोमेटेज, which will do the aromatization of androgens to the estrogen. So, what is the next risk factor? Next is nulliparity. Nulliparity. Then after that, other risk factor is what? That is women of reproductive age, means 30 to 40 years की जो females हैं, they are at higher chances of endometriosis. They are of higher risk of having endometriosis. Other is the high socio-economic status, because ज़्यादा high socio-economic status की जो female होगी उसका इतना ज़्यादा work नहीं करेगी, ज़्यादातर sedentary lifestyle होगा, that will leads to endometriosis. So high socio-economic status. Okay, so these are the certain risk factor that you need to know. Now let's discuss about the protective factors. What are the factors that gonna protect you from endometriosis? So protective factors. जो फर्स्ट प्रोटेक्टिव फैक्टर आपने याद रखना है, दैट इज स्मोकिंग. सो यूजुअली हम बोलते हैं स्मोकिंग मत करो, बट इस फीमेल को हम सजेस्ट करेंगे टू डू स्मोकिंग. वाई? बिकॉज जो स्मोकिंग होती है ना वो क्या करेगी, स्मोकिंग विल इनहिबिट द एरोमेटेज एंजाइम, एंड वी हैव ऑलरेडी डिस्कस एरोमेटेज विल डू द एरोमेटाइजेशन. सो अगर हम एरोमेटेज को ही इनहिबिट कर देंगे तो ईस्ट्रोजन ज़्यादा नहीं बन पाएगा. So smoking क्या करेगी, it will inhibit aromatase, so it is considered as protective factor for endometriosis. Other one is the physical exercise. Other one is what? Physical एक्सरसाइज. फिजिकल एक्सरसाइज का भी सेम मैकेनिज्म है. थर्ड वन इज ओसीपी. ओसीपी इज कंसिडर्ड एज प्रोटेक्टिव फैक्टर बिकॉज ओसीपी में क्या होता है, बोथ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन इज देयर. और आपको पता है जो प्रोजेस्टेरोन है अगर उसको ज़्यादा टाइम तक लेंगे तो वो क्या करेगा, इट विल डू द डाउन रेगुलेशन ऑफ द एस्ट्रोजन रिसेप्टर. ओके, सो it contain both what? Estrogen plus progesterone, and progesterone do what? It will do down regulation of estrogen receptor. Okay, so it is considered as a protective factor. Now there are certain theories that explain the endometriosis. So pathogenesis के लिए there are certain theories. The most accepted theory is the Simpson's theory.
सिम्पसन्स थ्योरी। अब सिम्पसन्स थ्योरी में इसने क्या कहा था, इसमें ये बोल रहा है कि नॉर्मली जब भी मेंस्ट्रुएशन होती है तो क्या होगा, एंडोमेट्रियल शेडिंग होती है एंड दैट शेडेड एंडोमेट्रियम केम आउट एज अ ब्लड फ्रॉम वजाइन। बट यहाँ पे क्या होगा, उल्टा होगा इसका। अभी ये जो शेड एंडोमेट्रियम होगी ना, ये कहाँ जाएगी, फैलोपियन ट्यूब में चली जाएगी या ओवरीज में चली जाएगी या पेल्विक पेरिटोनियम में चली जाएगी। तो देयर इज अ retrograde menstrual blood flow. So just write here, what is another name of Simpson theory? It is a theory of retrograde menstruation. Menstruation, ठीक है। इसका एक और नाम भी है, that is what? It is also called as reflex flux endo. Okay, so just remember this. It is a most accepted theory. It is what? Most accepted theory. Okay, other theories are also there. Second theory जो दी थी, that is given by the Mayer and Ivanov. Mayer and Ivanov. इसने क्या थ्योरी दी थी कि जो हमारे पेरिटोनियल सेल्स होते हैं, कुछ ऐसा हुआ कि दे आर कन्वर्टेड इनटू व्हाट, इनटू द एंडोमेट्रियल सेल। सो इसने क्या बोला, पेरिटोनियल सेल्स converted into what? Converted to endometrial cells. There is third theory also. This theory is called as Hellman's theory. Hellman's theory. Hellman's ने क्या थ्योरी दी, इसने बोला कि यहाँ पे एंडोमेट्रियम की मेटास्टेसिस होती है टू लिवर, लंग और ब्रेन. सो देयर इज अ मेटास्टेसिस ऑफ एंडोमेट्रियम, और ये कहाँ कहाँ होगी, टू द लंग, टू द ब्रेन एंड टू द लिवर. बट रिमेंबर, ये जो मेटास्टेसिस है कहाँ पे नहीं होगी, दैट इज स्प्लीन में नहीं होगी. दिस मेटास्टेसिस वोंट हैपन इन स्प्लीन. ओके, सो जो एंडोमेट्रियोसिस जिन फीमेल्स में होती है ना, कई बार वो जब आपके क्लिनिक में आती हैं तो वो आपको कंप्लेन करेंगी कि डॉक्टर मुझे कफ हो रहा है और कफ में ब्लड आ रहा है. ठीक है, जब आप फर्दर एग्जामिनेशन करोगे तो यू विल नोटिस कि लंग में क्या है, एंडोमेट्रियम है. तो जब भी उसको मेंस्ट्रुअल साइकिल होगा ना, तो क्या होगा, उसके लंग में ब्लीड होगा. तो जिसकी वजह से उसको कफ में क्या आएगा, ब्लीडिंग आएगी. So this is the theories that explain the pathogenesis of endometriosis. Now let's discuss about the symptoms of endometriosis. Symptoms. Now here there is a ectopic endometrial tissue. यहाँ पे क्या है, there is ectopic endometrial tissue. एंड ये जो एक्टोपिक एंडोमेट्रियल टिश्यू होता है ना, ये हार्मोन सेंसिटिव होता है. इट इज वेरी सेंसिटिव टू हार्मोन्स. इट इज व्हाट, इट इज हार्मोन sensitive. So if it is hormone sensitive means it grows from estrogen. So जैसे ही estrogen ज़्यादा होगा
तो दिस विल स्टार्ट ग्रोइंग. आपको पता है ईस्ट्रोजन क्या कराएगा? ईस्ट्रोजन प्रोलिफरेशन कराता है एंडोमेट्रियल ग्लैंड्स. ठीक है, तो इफ देयर इज अ मोर ईस्ट्रोजन ज्यादा प्रोलिफरेशन होगी, तो दिस एक्टोपिक एंडोमेट्रियल टिश्यू विल ग्रो. सो it grows in contact with estrogen. Okay. Now ये हार्मोन सेंसिटिव है, तो जब भी प्रोजेस्टेरोन का विड्रॉल होगा तब क्या हो जाएगी इस एंडोमेट्रियल टिश्यू की? देयर विल बी एट्रोफी. So on progesterone withdrawal, there is what? There is atrophy of endometrium. Okay, क्या होगा? Atrophy होगी. Now, what is the second symptom of endometriosis? There will be pain. यहाँ पे क्या होगा? Dysmenorrhea होगा. Dysmenorrhea क्या होता है? Pain during menstruation. और ये किस टाइप का dysmenorrhea होगा? This will be secondary. Why I am saying this is a secondary dysmenorrhea? Because it is because of some pathology. और पैथोलॉजी क्या है? एंडोमेट्रियोसिस. तो यहाँ पे क्या होगा? सेकेंडरी डिस्मेनोरिया होगा. एंड इसका अदर नाम क्या है? सेकेंडरी डिस्मेनोरिया को हम कंजेस्टिव टाइप भी बोलते हैं. इट इज अ कंजेस्टिव टाइप डिस्मेनोरिया. ओके. अदर सिम्टम इज देयर विल बी डिस्पैरायूनिया. इसका क्या मतलब है कि when this female is having intercourse तो इसको बहुत ज्यादा पेन होगा. So dyspareunia means painful intercourse. Okay, there will be dysgeusia also. What is there? Dysgeusia. डिस्चीजिया क्यों होगा? क्योंकि ये जो एक्टोपिक एंडोमेट्रियल टिश्यू है ना, ये रेक्टम पे जाके डिपॉजिट हो सकता है, जिसकी वजह से जब पेशेंट डेफिकेट करेगा तो उसको बहुत पेन होगा. सेम वे में डिस्पैरायूनिया का मैकेनिज्म क्या है कि ये जो एंडोमेट्रियम है, जो एक्टोपिक एंडोमेट्रियम है, बेसिकली नियर द वजाइना जाके डिपॉजिट हो जाएगी एंड ड्यूरिंग द इंटरकोर्स दिस फीमेल एक्सपीरियंस द पेन. So dysgeusia क्या है? It is the painful defecation. Fifth symptom here is what? That is dysuria. Dysuria क्या होगा? जब यूरिनेट करेगा तब उसको पेन होगी. और इसका मैकेनिज्म क्या है कि यहाँ पे जो एंडोमेट्रियम है वो ब्लैडर पे जाके डिपॉजिट हो जाएगी, तो इसीलिए पेन होगी ड्यूरिंग द यूरिन. So got it? These are the various symptoms that a patient of endometriosis is gonna experience. Now, when you are going to do the PV examination, PV stands for per vaginal or per vaginum examination. तो क्या होगा? जब आप पर वजाइनम एग्जामिनेशन करोगे ना, तो व्हाट यू गोना फील? You will feel there is a retroverted uterus. There will be fixed retroverted uterus. Secondly, यहाँ पे you will feel कि there is a adnexal mass. Adnexal mass और you can say ovary में एक mass जैसा feel होगा. So adnexal mass you gonna feel. Third is you will feel the cobblestone or
नोड्यूलर फील आएगी आपको यूट्रोसैक्रल लिगामेंट, कॉबलस्टोन और नोडुलर फील on uterosacral ligament. Okay, so got it? These are the findings you're gonna find on doing PV examination. Now, ultrasound examination on USG, you will find a classic appearance, that is the ground glass. We call it ground glass appearance. ठीक है, ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस देखने को मिलेगी. ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस क्यों है? दैट इज बिकॉज ऑफ द ओवेरियन सिस्ट. नाउ कैन यू अप्रिशिएट दिस अपीयरेंस? दिस इज कॉल्ड एज ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस एंड इट इज सीन इन द ओवेरियन सिस्ट. यहाँ पे क्या होगा? दिस ओवेरियन सिस्ट मीन्स ये चॉकलेट सिस्ट होता है. ठीक है, दिस इज व्हाट? चॉकलेट सिस्ट. बेसिकली इसमें क्या होगा, यहाँ पे जो एंडोमेट्रियम है ना, जब वो ओवरीज में जाएगी तो वो वहीं रहेगी. ठीक है, दैट विल स्टे हियर ओनली. उसको बाहर निकलने का रास्ता ही नहीं मिल रहा वो ब्लीड को, तो वो वहीं पे एक्यूमुलेट होने लग जाएगी एंड आफ्टर दैट इट विल गिव यू द अपीयरेंस ऑफ अ चॉक. तो इसीलिए इन केस ऑफ ओवेरियन और चॉकलेट सिस्ट आपको क्लासिकली ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस देखने को. ठीक है, नाउ ऑब्वियसली हम अल्ट्रासाउंड तो करेंगे ही, बट अगर कोई पूछे आपसे व्हाट इज द इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस, सो योर आंसर इज व्हाट? लेप्रोस्कोपी. सो लेप्रोस्कोपी is a investigation of choice. Now we said कि ये जो एंडोमेट्रियम है दिस कैन गो टू द पेरिटोनियल कैविटी. अब जब ये पेरिटोनियल कैविटी में जाएगी तो ये कहाँ कहाँ डिपॉजिट होगी? सो दिस एंडोमेट्रियल टिश्यू go and deposit. This endometrial tissue go and deposit in the peritoneal cavity. और ये कहाँ कहाँ पे होगी पेरिटोनियम में? It will deposit on the peritoneum or you can say intestine पे चली जाएगी ये, intestine. ओमेंटम पे ये डिपॉजिट हो सकती है on peritoneum. It can deposit on the urinary bladder. It can go and deposit on the rectum. It can deposit on the pouch of Douglas and it can go and deposit on the broad ligament. Okay. Now see, इसकी जो अर्ली लीजन्स होंगी ना, जो अर्ली लीजन्स होती हैं एंडोमेट्रियोसिस की, उसमें क्या क्लासिकल थिंग होती है? अर्ली लीजन्स जो होती हैं दैट आर टाइनी पिटेकिया लाइक. दे आर व्हाट? टाइनी पिटेकिया लाइक. पिटेकियल हेमोरेज देखे ना कभी कभी, स्मॉल स्मॉल डॉट्स, वैसी ही होती है इसकी अर्ली लीजन्स. टाइनी पिटेकियल टाइप. ठीक है, और कलर क्या होगा इसका? ब्लूइश ब्लैक सा होता है, दैट इज ब्लूइश ब्लैक कलर. वेयर एज अगर हम लेट लीजन्स की बात करें, लेट लीजन्स कैसी होंगी? लेट लीजन्स लाइक, सो अगर हम लेट लीजन्स की बात करें तो लेट लीजन्स कैसी होती हैं? दे आर लाइक अ गन पाउडर सॉर्ट ऑफ. दे आर लाइक गन पाउडर लीजन. ओके, या इसको गन शॉट भी बोल देते हैं, गन शॉट बर्न अपीयरेंस.
ओके, सो ये आपने याद रखना। हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि एंडोमेट्रियम अगर ओवरी में जाएगी तो इट विल फॉर्म अ चॉकलेट सिस्ट, और यहाँ पे लिख लो ये जो चॉकलेट सिस्ट है इसका कलर कैसा होगा, इट विल बी लाइक अ डार्क टारी ब्राउन कलर, दैट विल बी लाइक अ डार्क टारी brown. I will show you the image of this chocolate cyst. Can you clearly appreciate this chocolate color thing inside the ovary? This is actually a chocolate cyst. Cyst of endometriosis. ठीक है, ये पिक्चर याद रखनी है आपने, ठीक है। ये जो चॉकलेट सिस्ट होता है ना, दिस इज एक्चुअली अ ट्रू सिस्ट. व्हाई इट इज ट्रू सिस्ट? बिकॉज इट इज लाइंड बाय द columnar epithelium. It is called as true cyst. Why? Because it is lined by columnar epi. Got it? Now, third, this endometriosis can form adhesion as well. So, it can form what? Adhesions. ठीक है, तो adhesions को अगर आपने find out करना है तो क्या करो? How you gonna diagnose? So by laparoscopy you can find the lesion and you can burn those lesions. Now for the diagnosis, if they ask you what is the gold standard test is what? That is histopathological examination. Histopathology is a gold standard for this. Okay, now question, if they ask you which organ involved first in endometriosis, so what is your answer? First organ to be involved in endometriosis is what? That is our ovaries. Ovary is the first organ. Okay, and if similarly they ask you the second organ to be involved, so what is your answer? That is pouch of Douglas. Pouch of Douglas. Pouch of Douglas, what is other name? It is also called as cul-de-sac. It is also called as retrouterine fold of peritoneal or retrouterine pouch. Alright. So first organ is ovary, second organ is pouch of Douglas or cul-de-sac or retrouterine pouch. Okay. Now how you gonna manage this case? How you gonna manage this patient? Management. So for management, first we'll discuss about the management of the ovarian cyst. Ovarian cyst. See, if the size of the cyst is less than 3 centimeter, then what you gonna do? You will gonna do the cyst aspiration. We'll do cyst aspiration. But if the size of this cyst is more than 3 centimeter, then we'll do the surgery, and this is what? Cystectomy. We'll do cystectomy. Okay, so remember, if size is less, then cyst aspiration. If the size is more than 3 centimeter, you will do cystectomy. Now for endometrial deposit, what you can do? If the endometrial deposits are present over some organ, then how you gonna treat that? So for
endometrial deposits will do what? Will go for cauterization or thermal or laser fulguration. Will go do cauterization or will do thermal or laser ablation or fulguration. Okay. And for adhesions, what you gonna do? So for adhesions, what you gonna do? That is adhesiolysis. Okay. So this is the management of the cyst, the endometrial deposit. And now what is the medical management that you're gonna do? Medical management. So for medical management, what is the best drug? The best drug is continuous GnRH. Best drug is continuous GnRH. Okay. If they ask you what is the most common drug that we use to treat endometriosis, then the most common drug is progesterone is most common. Okay. What are the other drugs? You can use OCPs. Why you can use OCPs? I told you. What is the main function of OCPs? They suppress the ovarian function. And if they suppress the ovarian function, then क्या होगा? There will be an ovulation. And आपको पता है कि OCPs में प्रोजेस्टेरॉन भी होता है. ये प्रोजेस्टेरॉन क्या है? इट इज एंटी ईस्ट्रोजन. सो अगर ईस्ट्रोजन के अगेंस्ट प्रोजेस्टेरॉन काम करेगा तो ऑब्वियसली जो एंडोमेट्रियल ग्रोथ है उसको ये लिमिट कर देगा. सो जस्ट राइट इट डाउन हियर. OCPs आर व्हाट? दे suppress the ovarian function. They suppress ovarian function and hence क्या होगा? There will be an ovulation. Just remember one thing कि एंडोमेट्रियोसिस में हमारा मेन जो एम है ट्रीटमेंट का वो क्या है? इधर तो ईस्ट्रोजन को इनहिबिट कर दो. ऐसी कोई भी मेडिसिन जो कि ईस्ट्रोजन के अगेंस्ट काम कर रही हो वो चीज करेंगे. ऐसे कोई भी थिंग जो ईस्ट्रोजन के लेवल को हमारी बॉडी में कम कर रहा हो, वी विल सजेस्ट दैट थिंग टू द पेशेंट. एंड सेकेंडली व्हाट यू विल सजेस्ट, या तो आप साइकिल को एनओव्यूलेटरी बना दो कि ओव्यूलेशन हो ही ना और उसको पेन ही ना हो. ठीक है. या फिर यू कैन सजेस्ट टू कंसीव. और ऑब्वियसली आप ये सबको सजेस्ट नहीं करोगे ना कि कंसीव करो. एक एज के बाद यू कैन सजेस्ट दिस. सो दिस इज द मेन एम टू ट्रीट द एंडोमेट्रियोसिस. जस्ट रिमेंबर. एंड ओसीपी में क्या होता है? प्रोजेस्टेरॉन. सो प्रोजेस्टेरॉन क्या करेगा? इट विल इनहिबिट ईस्ट्रोजन एक्शन एंड लिमिट्स द endometrial growth. Okay. Other drug that you can use here is letrozole. You can use letrozole. You can also use gestrinone. ये जो gestrinone होता है ना, ये क्या है? This is a synthetic steroid. This is what? This is a synthetic steroid. तो ये बेसिकली क्या करेगा? This will inhibit aromatase enzyme. So aromatase को inhibit करके same will be there. Estrogen कम हो जाएगा
इसका क्या फंक्शन है? मेनली it has the androgenic function, or you can say androgenic and anti-estrogenic function. So this has what? Androgenic and anti-estrogenic function. Okay, same way में you can give danazole also, और ये दोनों का सेम ही मैकेनिज्म है. दे बोथ आर सिंथेटिक स्टेरॉइड्स. इनका साइड इफेक्ट क्या है जेस्टिनोन और डानाजोल का? दे विल कॉज हिरसुटिज्म. हिरसुटिज्म मीन्स इस फीमेल में फेशियल ग्रोथ आ जाएगी इफ यू आर गिविंग जेस्टिनोन और डानाजोल टू द फीमेल पेशेंट. सो जस्ट avoid giving this drug before the age of 35. After that you can give, but before that just don't give this drug. Okay, other drug that you can use here, that is mifepristone. आपको पता है इसमें क्या होता है? प्रोजेस्ट्रॉन. So obviously you can give this drug. Okay, now we have already discussed अगर endometrial टिश्यू आके यूट्रोसैक्रल लिगामेंट पे डिपॉजिट हुआ तो दिस कैन ब्रेक द लिगामेंट and we call this syndrome as Allen-Master syndrome. So just write it here, make it a note. If endometrial tissue breaks the ligament, then it can cause what? Then this will called as what? Allen-Master syndrome. Okay, because of the deposit this ligament can break and we call it as Allen-Master syndrome. Okay, now this is all information about endometriosis. I hope you guys like this video. Thanks for watching.